Welcome back po sa ating channel. Long time no see. And super busy po talaga ako this last few days kasi si mama, 'di ba? Naperahan na po siya ngayon. Si mama, bago po siya inoperahan, merong mga bisita. Tapos kahit wala siya dito, may bisita pa rin. Tapos nung nakauwi na naman sila dito, meron namang bisita, ganun. Ganito kasi sa kanila dito, talaga, dalaw-dalaw talaga, bisita-bisita. Tapos, pagkatapos, panitapos, ang dami ko pong gawain. Naglinis ako ng bahay, naglaba. 2 beses po akong naglaba kasi una, yung wala sila mama dito, naglaba muna ako kasi para pag uwi nila, medyo mabawas-bawasan yung labahin ko kasi alam kong pag uwi nila, marami na namang mga maduduming damit. Kaya sakto talaga nung laba ko nun. Tapos ayun, pag uwi nila mama, meron na namang labahin kaya nilabahan ko kaagad kasi ayokong matambak yung yung labahin ko. Tapos nakauwi na si mama. Ayun, natulog na siya sa ngayon. Yung akala ko, tinanggal yung talagang niya, yung dede niya, tinanggal talaga yung lahat sa side na to. Yung pala, para siyang hiniwa lang, tapos tinanggal yung mga laman-laman, ganun. So, yun, hinihintay na lang po namin yung result ng test sa niya. Tapos, dun, tsaka na malalaman kung i-radiation ba, chemo, or operahan ba ulit, ganun. Ayun. Please pray for my Mother Earth. Pag kunwari, ganito, ngayong gabi siya, hindi, kaninang mga alas 10 a.m. siya na operahan. Tapos pagkabukas nun, uwi kaagad sila. Sabi naman ng doktor na, okay lang daw, ganun. Kawawa si mama. Pero pag naman, nung nag-travel naman sila pauwi dito, kasi from Lahore papunta sa amin 8 hours. Wala naman sa awa ng Diyos. Hindi naman daw sumakit yung ni mama. Wala man daw sakit. Panay ako tawag, panay akong tanong, sakit, masakit ba? Ganun. Kasi, syempre, wala pang tapos inuwi kagad si mama, tapos wala naman daw. Nung lang, kaninang umaga, sumakit siya. Syempre, malamig. Pag dito, pag alas 12 ng tanghali, mainit, mga 10 a.m. to 3 p.m. mainit siya, pero pag umaga, malamig talaga, sobrang lamig, kaya siguro si mother, nalamigan yun siya, parang ayun, kaya sumakit siya. Tapos last, sumigaw siya kasi kaming lahat nasa kwarto ni daddy, magkabila kasi magkaiba kasing kwarto si mama, diba? Si Jabran yung kasama niya. Umaga nun, si Jabran nasa kwarto ni daddy kasi doon nagbibihis. Kami lahat andun, si Emma, binibihisan ko. Tapos biglang sumigaw si mama. Akala ko, ay, masakit. Ang sakit daw. Kaya dali-dali akong gumawa ng niya, almusal. Binigyan ko siya, pinakain ko siya. Tapos ayun, binigyan ko siya ng gamot. Pagkatapos yung gamot, yun, wala na. Lakad-lakad na si mother sa lakad-lakad na siya sa labas. Bukas tawag dito, bibidyohan ko siya bukas. Nag-worry talaga ako kasi, naku, ang aking mom, pati naman si daddy, Pero si daddy ngayon sa awa ng Diyos, sa mga nagdasal-dasal, medyo okay talaga si daddy ngayon. My dad. Ayun. Merong mga problema. Sabay-sabay na lahat. But God is good. I know, malalampasan namin itong mga problema na to, diba? Wala naman sigurong problema ibibigay ng Diyos na hindi natin kaya. Ganun talaga ang life. May kanya, tanggalin ko muna itong bitches ko. Ganun talaga ang life. Hindi natin maraming pagsubok sa buhay. Diba? Kaya kayo, may problema kayo, laban lang talaga. Laban lang. And talk to God. One eternity later. Hello po, welcome back po sa welcome back po sa ating channel. Ay, pupunta po kami sa baba kasi ipapaupo na daw po nila yung manok para mangitlog. Si Auntie Roxana po yung magpapaano ng manok. Ayan siya. Siya po yung magpapaupo ng manok.
अंडे आजे यकी की यार सारे अंडे Ala, John na, Ah, John. अंडे ही Niluto ko, himalay ko po kasi na ano, hindi ko alam na ipapaitlog pala nila yung ano, manok. Gagawin nila sisiw yung ano, yung mga itlog, niluto ko na. ठीक है Boom, ni kaya na, maliit yan. Super liit dyan, paupuin yung manok. Yan, pasok na tayo sa ano, kulungan ng manok. Pinapasok po sila tuwing gabi kasi malamig dun sa labas. Ayan. Ayan, hala, upo na siya. एक पता है कुदर में पैवे ना ईदी में पैवे से बाहर ते एक साड़ियां पड़ी हैं वो तो को चादर ऐसा ही था लगी ये Hala, nakaupo na yun. Uy, nianda. तू सुना सामान ये दाबड़ा तो गया दाबड़े लगे ना दाबड़ी थी दाबड़ा होता है Kuy, box ta ko na doon eh. दाबड़ी था बीच मिशा का सकते हैं ना दाबड़ी पे Nahanap po nila yung ano, planggana. इधर बाहर शर कौन दाबड़ा आदर उधर बूटी अपर तक ना बेड़ी पे ही बेड़ा है एक मिनट दाबड़ा पीछे आ पीछे आना और दाबड़ा मिला मतलब look at this domla look at this legs yeah boy look at this Wings. wings Bazo. is look at it is gardan gata Neck. neck बारोटी बजा बड़ी जी आंटी चेक दाबड़ा है लेकिन कपे आ मुंह ओ ठीक कुकड़ी इधर ही खाना तो उतरोड़ा कुछ है Ayan na. शापर शापर है जिब्रा बोला जबरान नहीं ना तो शरिया क्या शापर दी पोरा ओ पीछे आंटी बाहर से जाके जा वाला है उस साइड में इधर पानी कौन इधर पानी अच्छा बात है Yan, dyan nila papaupuin yung manok. मैंने तो लाइट पहले कुछ दिया ना नहीं हो नहीं आंटी की बड़ी पे आंटी इतना ला रही हो कैसे रख सी हुई वो तो सारा सियाना मार लो ये तो सब बुझ जाए बन्ने हो बच्चे बच्चे और आदल जी थोड़ी कुकड़ी बेसी उठी था कुदा जिता तो सच को दूसरी बनाई है हां जी दाबड़े जो टुकी दा उठी बेई है नहीं जानी कुछ और जो दाबड़े उठी रखी जो नहीं जी मेरी गल मैं दी सही में बड़ी है जिता कुकड़ी ताब हो तो नहीं उठनी हो ये गल या काला बल 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 ले सब का करनी है अब पढ़ो आंटी की पढ़ो वहां से आंटी सो पढ़ो कुकड़ी चाहिए नहीं इधर अरे बोलो उठी डर लगना आंटी इज डन मैं तो कौन जी ये पूंजी तो उठी बेसी उठा पर को कंडा Oh, anda. चार अंडे Uy, uy. Pang ano, apat. अंडे अंडे दीनी है अंडे बस कितने वैसे तो ये Gar me, gar me. आपो घर में अंडे इस वे दो अंडे कुछ नहीं दो अंडे अरे बेड़ी नहीं बेड़ी अंडे छोड़ा जा ऐसा नहीं बेड़ी बालना मेरा अब पीछे कर एक चप्पल है 10 बार तकड़ी तकड़ी 8 अंडे के ने चंगा ठंडा कहने ते दाबड़े रिश्ता में दबो तीन अंडा पर नहीं उड़े ओ नहीं भजना इस अंडा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये छुरी वीडियो ये पड़ो वीडियो कुकड़ी चाहिए कुकड़ी चाहिए ना आंटी बस इज द पहला Chupit, prende. boy is the pella give me this is going to bar लो मैं ओ है जल्दी जल्दी अंदर लेंदे मुक राई चलने अस चलने कम मैंने पता है कुकड़िए अंडे बच्चे सारे कढ़िया आदली शौक कहता ना कड्डे तो मैं छुना टुक्की छोड़ू आ तकी की नप्पर तक तक अपर अपर तक अपर ऐ नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह हमारी इज्जत रखे एक मिनट में मांगी तारे मरी ओ तो इज्जत ना रखी रे छुना गाता ले छोड़ आंटी कहता उठाना बैठे थे उसके ऊपर बैठी लॉस जितना ना खाए मैं दम बैठ जा तो निकाल टुकड़ा रखी ने अंडा भर गया बात का टुकड़ा रखी ने पर ये खुटी है तो कहीं ना ये कभी जो खाना मतलब था ना इधर कुंजा खत्म करना था ना वो बिस्मिल्लाह पता लगा बैठे नहीं मैं डूर इधर पर इधर पर 2 मिनट वो था भी जैसी एक मिनट हां पोड़े छुरी उठी कर दो तकले ना ये निकाल थी बाली बैठी ना पक्का या कमरे में
भेजा भेजा बिस्मिल्लाह तक्के पिछो पिछो पता लगी गया ना जरा अंडे अंदर है ये बड़ियां भैड़ियां होनी ने कि पता है पता लगी ये संडे ना पनिया अंडा अंडा ना पनिया राम जादी ठेला करने ठेला करने जी चेक करने मारे अंडे ये बहुत सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भेजा इतनी भेजा बिस्मिल्लाह बेई आदत वाली किस्मत भूल लगी है बेई आती माशाल्लाह ये तो लग रही अब टुकड़ा रही ना नो उनका सब टुकड़ा कुंजा खत्म कर जी वो तो कुंजा खत्म कर तकी की ते बेई आती इतु कुंजे पर भेजा सी नहीं Wow, very good. वो कुंजे की चादर इधर कर शुरू उठो मतलब समान ऐसा है फिर तो ऐसे पता नहीं लगना दो दिन इधर ही फिर यही लिया बिस्मिल्लाह शुक्र अल्लाह जी सुना वो मेहरबानी करी Thank you. जो किधर धुई जाओ पूरी कर देनी बेटी मेरी ना ओके जो नहीं है ये आप क्या इधर पर आसान नहीं है आप ही भैया पर आप ही आओ ए इन्हीं का मैसेज ने अरे चूड़ी कौन दसी दसी है छुरी दसिए छुरी थी मैं छोड़ी है आज हम चूड़ी दसी कौन दस दसिए सौ के साथ सॉन्ग की सोचो ऐसी कपसू आज मन को कुछ ना क्या काम बुकर कर Is auntie करने हो? Allah. Pinakita po yung kutsilyo sa manok. Tinakot po nila yung manok pag hindi daw po umupo sa ano. Inupuan yung mga itlog. Ano? Putulan daw ng leeg. Excuse kaya, auntie? ये जरा ये मदरा के लिए कि मसाला पैर लगा ब्लैक है सारे कुछ Hoy, hoy, hoy. Si Afia na ano. तुम्हारा मुंह जरा ना अच्छा ना? चाचू मुंह बाशो Eh, हां तो बड़े फ्लैग दिखा रही है फ्लैग चार बेस में था ठंडे बारिश yan, dito na kami sa taas. दाबरे भैया ने जिधर कुकड़ी ता बैठी हो तो कुकड़ी सुनी नहीं मैं नहीं तो दाबरा उठी रखी है वहां पर